Dear students, good evening. I am Ramdas. I welcome you to my channel Maths from Basics for you. Today it's my class number 34. आज मैं बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम कर रहा हूँ. मैंने आपसे कहा था कि 7वीं क्लास कक्षा से मैं गणित करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे गणित में कमज़ोर होते हैं. पूछे पर वो कहते हैं सर हमें अच्छा नहीं पढ़ाया गया, हम गणित में कमज़ोर थे, हमारे लिए अध्यापक अच्छे नहीं थे, इसलिए हम मैथ्स को गणित को हम पसंद नहीं करते. मगर अगर आप लोग ध्यान दें कि मैं कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, तो आप मेरे साथ मेहनत कीजिए. मैं देखूँगा, मैं इतना तो मैं आपसे वादा करूँगा कि आप लोग मैथ्स में गणित में कभी कमज़ोर नहीं होंगे, बल्कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे. इतना कुछ मैं कर सकता हूँ. मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं आज तक सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, पीयूसी स्टूडेंट को पढ़ाया है. पहली बार मैंने सोचा कि मैं 7वीं कक्षा से शुरू करें ताकि आप लोगों का फाउंडेशन इम्प्रूव करें. फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग हो तो आपका घर मजबूत होगा. अगर फाउंडेशन वीक होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक से पढ़ें. तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊँ ताकि आप लोग कभी ये ना कहें कि आप मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं. तो ये मेरा ये है कि आपसे वादा है कि मैं आपका जो भी तकलीफ़ है उसको मैं दूर करूँगा. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम बच्चों, कहते हैं इलू इलू. इलू का मतलब यू विल टेल मी आई लव यू. यस स्टूडेंट्स, इवन आई लव यू टू. बट बच्चों, मैं ये कहूँगा कि पहली बार मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ. ईटू ईटू. सो आप पूछेंगे ईटू का मतलब क्या है सर? ईटू का मतलब आई टीच यू मैथमेटिक्स. सो डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट विथ सम सिंपल बेसिक्स. आपको बेसिक्स सीखनी है. मैं कोशिश करूँगा कि आप बेसिक्स से सीखें. तो मैं कुछ इंटीजर, मैं नेचुरल नंबर्स में नहीं चाहूँगा, उसके लिए मैं अलग क्लास लूँगा. मैं आपको कुछ इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बारे में कुछ जस्ट 2-3 शब्द कहूँगा. उसके बाद मैं ब्रैकेट से शुरू करूँगा. ब्रैकेट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चों को ये नहीं पता कि ब्रैकेट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है. तो मैं चाहूँगा कि आप ब्रैकेट्स को कैसे इस्तेमाल करोगे. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गलतियाँ यहीं पे होता है. अगर जहाँ पे गलतियाँ होती है वहीं पे आपको सुधार लूँ तो आप कभी गलतियाँ नहीं करोगे. तो मैं आपको इंटीजर से सिखाऊंगा, कुछ थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसके लिए अलग कक्षा लूँगा. अब मैं आपको क्लास में बारी बारी में अंग्रेज़ी में और हिंदी में भी पूछ सके. मैं अंग्रेज़ी में बहुत तेज़ हूँ, मगर हिंदी में उतना नहीं. फिर भी एडजस्ट कर लो, कहीं पे अगर गलतियाँ हो जाए तो जस्ट इग्नोर इट. सो डियर स्टूडेंट्स, विल सी व्हाट इज इंटीजर्स. So until now I had been thinking of doing classes for 7th standard kids. So because that is where I wanted to handle, because most of the kids, they don't like mathematics because they are not good in mathematics. The reason is either they do not have good teaching faculties in their schools, or they are not being taught properly in their schools. So whatever I say, that is, if you have a strong foundation, you can definitely construct your first floor, second floor, third floor, etc. So foundation is very very important बच्चों के लिए. तो मैं चाहूँगा कि आप फाउंडेशन मजबूत कर लो एंड करेंगे. तो इंटीजर के बारे में कुछ कहूँगा. सो नाउ ये देखो, लेट्स सी व्हाट इज एन इंटीजर. इंटीजर क्या होता है. तो देख लो कि अगर मैं आपको कहूँ 1, 2, 3, 4, 5 until infinity, तो ये सब लोग पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर्स. और यू कैन even take 0, -1, -2, -3 and so on. So integer is nothing but positive numbers, or including 0, positive as well as negative numbers. A integer cannot be a fraction or a decimal, so it has to be
a whole number, that is positive integer or negative integers, but integer should not be negative or decimals, then it is not called a integer. For examples of integers are -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, etc. up till infinity. They are all integers. So as I said, integer कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, आई मीन टू से फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, और इट शुड उसमें डेसिमल नहीं होनी चाहिए. मतलब इंटीजर्स कैनॉट बी हाफ, 3/4 और 3/7 और 0.0, 0.33, 0.54, etc. They're not integers. So remember this point. ध्यान रखें कि इंटीजर नहीं हो सकता. They cannot be integers. So this is about integers. We have studied what is integer. Now let us think about what is natural numbers. So we'll think about natural numbers. Natural numbers. Natural numbers are nothing but a part of number system. It contains only positive integers from 1 to infinity, and it does not include 0. So natural numbers will not have 0, but it will have only positive integers from 1 to infinity. It will not have negative integers as well as 0. That is called a natural. These are called natural numbers. Example 1, 2, 3, etc. up till infinity. So it will not have no negative integers, and does not include 0. It does not include 0 and negative integers. It's only positive integers from 1 to infinity. They are called natural numbers. Now what about whole numbers? Whole numbers. What are whole numbers? So whole numbers are nothing but a set of positive integers which includes 0. That is 0, 1, 2, 3, etc. up till infinity. So these are called whole numbers. Set of number system which starts from 0 up to infinity, they are whole numbers. It does not have negative values, negative integers. Such a number system is called whole number. Okay dear students, ये बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है whole numbers क्या होता है. whole numbers के अंदर 0, 1, 2, 3 up to infinity तक बनता है, मगर इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होनी चाहिए, और इसमें फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए. इंटीजर्स का मतलब non-zero and no fractions. So that is called integer. So whole number के अंदर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 etc. up to infinity रहता है. Prime numbers. Dear students, what are prime numbers? Prime number, for example, you see this number, that is 1, 3, 5, 7, 11, etc. These are numbers which are divisible by 1 itself or by the number itself. For example, 1. If you take
1 is divisible by 1 itself, 3 is divisible by 3. There is no other number which can be divide 3. So or it can divide itself, that is 3 divided by 3. It can divide itself. यहाँ पे क्या होता है प्राइम नंबर्स के अंदर 1, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा है ना, सबको प्राइम नंबर्स कहा जाता है क्योंकि 1 को डिवाइड करने के लिए 1 से होता है, इसके अलावा दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता. 3 का भी फर्ज करो, टेक 6 कैन बी डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3. 6 divided by 3 equals to 2. 6 divided by 1 equals to 6. 6 divided by 6 equals to 1. These cannot be prime numbers because ये सब कुछ is divisible by other numbers. But in this case, you cannot divide this number by any other number other than its own, that is itself, that is by 1. Or see, 3 can be divided by 1 or 3 can be divided by 3. Other than that, you cannot. Even you take 7 or you take 11, you cannot divide. It can divide by 1 or 7 by 7. Such numbers are called prime numbers. So dear students, today you have learned आपने natural numbers, whole numbers, integers, then prime numbers पढ़ा है. इतना काफ़ी है मेरे लिए आगे पढ़ने के लिए. I don't want to go deep into the subject because that is not required at present. So I have given a brief knowledge about numbers system, that is prime numbers, whole number, natural numbers, then integers. That's sufficient for me. So we will go for next. और मैंने देखा है थोड़े बच्चे लोग क्या करते हैं. So today's class I am teaching only for 7th standard onwards. So for degree students, PhD students and diploma students, it will be revision for them, but it is exclusively for 7th onwards, 7th, 8th, because it is common to them. Because these brackets, how to use brackets, it will be useful even for engineering students. Because मैं देखा है थोड़े लोग इंजीनियरिंग में भी गलतियाँ करते हैं. ब्रैकेट्स को कैसे हल किया जाता है, ब्रैकेट्स कब यूज़ किया जाता है, उनको पता नहीं, गलतियाँ कर देते हैं. ये एक ब्रैकेट्स में गलती हो गया तो सारा प्रॉब्लम गलत हो गया. इसलिए आपको क्या करनी है, कैसे करनी है, मैं सिखाऊंगा आपको. ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किस तरह करनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको सीखनी है. बचपन अगर आप लोग शुरुआत से सीख जाओगे तो आइंदा आपको तकलीफ नहीं होगी. इसलिए मैं कभी जब भी पढ़ाता हूँ बेसिक से पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को कहीं पे मुश्किल ना हो. इसलिए ध्यान दीजिए, कृपा है, और पढ़ो बच्चों. सो मैं हूँ आपके लिए पढ़ाने के लिए. सो इसके बाद कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि गणित मेरे लिए बहुत मुश्किल है. मैं गणित को आसान करके दूंगा आप लोगों को. आज से अगर आप लोग मेरे साथ हो और मेरे हर कक्षा, हर क्लास को जो भी मैं पढ़ाता हूँ बोर्ड पे, अगर वो अच्छी तरह से दोबारा घर में बैठकर आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रयास करें, तो आपको आसान हो जाएगा. वरना गणित मुश्किल हो जाएगी आपको. तो कृपया बोर्ड पर ध्यान दीजिए. सो नाउ ब्रैकेट्स क्या होता है. सो दिस आर इम्पॉर्टेंट. Brackets. See, dear students, brackets. So what is brackets? First type of bracket is what? That is common bracket. Is also known as parenthesis. Also known as parenthesis. Either, so it is, how it is denoted, it is a common bracket is denoted like this, and it is, we have floor bracket, or it is also called as curly bracket. Curly bracket. How it is denoted? It is denoted like what?
these are flower bracket or curly brackets. So I'll rub this. Third type is square brackets. Square brackets, I'll rub this and make it small one here. So I'll write it here. Square brackets, or also it is called as box bracket. Also called a box bracket. Fourth one, vinculum. So vinculum. So I'll tell you इसका बारे में जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो मैं आपको कहीं समझाऊंगा किस तरह इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल होता है, इसको प्रायोरिटी भी मिलता है, उस प्रायोरिटी पे करना है आपको. पहला प्रायोरिटी किसको देना है? सी व्हेन यू कम टू हायर स्टैंडर्ड आई विल टीच यू. वी हैव BODMAS. BODMAS, that is for brackets of division, multiplication, addition and subtraction. For 7th standard you don't have BODMAS, so we will not bother about this. But I am going to teach you the priority how to use these brackets, which is very important because some students they go wrong while using these brackets. So if you don't use these brackets properly, you will get different answers. So for which bracket you have to give priority first, that you have to learn. Otherwise you will get different answers. So अगर ब्रैकेट से सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स करने में दिक्कत आएगी और गलत होगा, और एक प्रॉब्लम दोबारा यू विल नॉट गेट ए करेक्ट आंसर. आपको सही प्रॉब्लम का आंसर नहीं मिलेगा, अलग अलग आंसर मिलते रहेगा आपको. इसलिए इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं ब्रैकेट को, वो सीखना है आपको, वो मैं सिखाने वाला हूँ उससे. सो अब एक छोटा सा प्रॉब्लम लेंगे. हाउ टू यूज ए प्रॉब्लम, how to use these brackets. Dear students, आपके पास एक प्रॉब्लम है. 256 minus, open the big bracket, half into that floor bracket, 56 plus small bracket, 41 minus 2 plus 9 plus 2 vinculum, close the bracket, plus 110. अगर आप लोग इसको सही तरीके से सॉल्व नहीं करोगे तो गलत आंसर मिलेगा. तो एक आदमी द प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन, दैट आंसर विल डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन इफ यू डोंट यूज द ब्रैकेट्स प्रॉपरली. देयर इज प्रायोरिटी ऑफ यूजिंग दिस. सो पहला क्या करना है आपको, व्हेन एवर यू सी विनकुलम, फर्स्ट गिव प्रायोरिटी फॉर विनकुलम. सो सॉल्व फॉर दिस, दैट इज प्रायोरिटी नंबर 1. पहले जब भी आप विनकुलम देखोगे, व्हाट इज कॉल्ड दिस बार, व्हेन यू सी दिस 9 minus 6 like this, you have to give priority 1, first priority. First priority. उसके बाद second priority is for solve the problem within the small bracket. Afterwards this bracket, full bracket. Afterwards this, and lastly you have to remove. So आपको क्या करना है, विनकुलम को सॉल्व करके विनकुलम निकालना है, हटाना है. उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को हटाना है, उसके बाद फ्लोर ब्रैकेट को हटाना है, उसके बाद फाइनली स्क्वायर ब्रैकेट को हटाना है. अगर ऐसा नहीं करोगे, ये प्रायोरिटी नहीं दोगे, तो गलत जवाब मिलेगा आपको और आपका प्रॉब्लम सही नहीं होगा. तो क्या करें, वी हैव टू यूज द प्रायोरिटी फर्स्ट फॉर द विनकुलम. सॉल्व फॉर विनकुलम, देन स्मॉल ब्रैकेट्स, then flower brackets, then we have to go for finally the square brackets, then only we'll get the correct answer. So we'll solve this. So what I'll do, I'll rub this, इसको मिटा दूंगा. So this is equals to 246 minus, I'll write like this as it is, this is half, flower bracket open, 56 plus, that is 41 minus,
So what I'm going to do, मुझे vinculum, I have to give priority for vinculum. So first is 9 plus 2 is 11, right? Then close the, what happened? The vinculum is gone. We have removed the vinculum first. So ये आपका first step होगा. अगर ऐसा नहीं करोगे तो गलत आंसर आएगा. तो 9 plus 2 सॉल्व किया पहले तो 11 आ गया. उसके बाद close the bracket, small bracket, then 110 and square bracket. इसके बाद क्या करना है आपको? इस ब्रैकेट का जो भी है उसको सॉल्व करना है पहले, not other things. Concentrate on how to remove the brackets on priority basis. First start with small bracket. So next step, this is equals to what? 246 minus, open this, half, this is 56 plus 41 minus 11 is 30. So I have removed that, I straight away added 30. So this bracket is gone now. So plus 110. Done. First step, second step, third step. Now I have to remove this bracket. So what I have to do? I have to solve this within this. So this becomes what? 246 minus half. So this becomes what? Into 56 plus 30, 86. That becomes 86. Done. So plus 110. So what I'll do? I'll use a bracket for this because I don't want you to go wrong. So what happens to this? This is equals to 246 minus, this goes 43 times, that becomes 2 1s are, 2 4s are, 2 3s are, 43, okay, plus 110. डन. इतना है. इसके बाद क्या करना है आपको? स्क्वायर ब्रैकेट हटाना है. स्क्वायर ब्रैकेट हटाते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो गया? दैट इज इक्वल्स टू और implies that is 246 minus 43 plus 110, 153 minus 153. So that is equals to what? 246 minus 153. 6 minus 3 is 3, 14 is 9. So the answer equals to 93. If you add this, you should get same one. If you add this, 6, 5 plus 9 is 4, 1 there, 246. So answer is 93. That is equals to 93. Therefore equals to 93. This is the answer. So write the question first and then write the answer. So dear students, इसको इस तरह सॉल्व करनी है. Let us use this and write this neatly. This is equals to 93. This is the required answer. Students, if you use your brackets properly, you will get correct answer. You don't use your brackets and its priority, you will get wrong answer. So this is how मैंने देखा है. अगर ये गलतियाँ सिर्फ बच्चों नहीं करते, बड़े बड़े लोग जो कॉलेज में करते हैं वो भी ये गलतियाँ करते हैं. इसलिए वो लोग अच्छा करने के बावजूद कम मार्क्स मिलती हैं उनको, क्योंकि गलतियाँ होती है. So if you go wrong, it's gone. That problem, full problem is gone. So we'll go for second problem. I'll rub this. बच्चों हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है. 69 minus, open the square bracket, 32 minus, open the flower bracket, 26 minus, open the small bracket or parenthesis, 18 minus 6 minus 2 vinculum. Close the flower bracket, close the parenthesis, close the
फ्लोर ब्रैकेट प्लस 60 एंड क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। जहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करते हो वहाँ पे ब्रैकेट क्लोज भी करनी चाहिए। अगर आप इतना करने के बावजूद इस ब्रैकेट को नहीं डाला तो मतलब कुछ और निकलता है। सो इसको ब्रैकेट हमेशा जिस तरह आपने ओपन किया है ब्रैकेट को क्लोज भी करनी चाहिए। एज यू हैव ओपन दिस ब्रैकेट यू शुड क्लोज द ब्रैकेट। You open the floor bracket, you have to close the floor bracket. You have opened the small bracket, that's common bracket, you have to close the common bracket. And you have a vinculum for 6 minus 2. First priority for vinculum. So how to solve this? Okay, so we will go this. This equals to 69 minus 32. Open the floor bracket. This is 26 minus 18 minus 6, priority number 1, 6 minus 2 is 4. Close the bracket and close the parenthesis. See now you have common bracket, that is common bracket, floor bracket, square bracket. So add this 60 and close this bracket. Now you have to remove this. आपको नेक्स्ट क्या करना है, इस कॉमन ब्रैकेट को हटाना है। तो हटाने के लिए इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये खुद ब खुद हट जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 69 माइनस 32 माइनस दिस विल बी व्हाट, 26 minus 18 minus 4 is 14. Close the bracket. As you opened, close the bracket. Plus 60 and close. Next time आपको क्या करना है, इसको solve करो तो खुद ब खुद ये हट जाएगा। So solve this, you can remove this bracket. So that is equal to what? 69 minus 32 minus 26 minus 14 is how much? Don't take chances, always better do it there. So 12, because एक कभी कभी करने से गलती हो जाती। So एक बार अगर जितना भी छोटा हो एक बार कर लो। तो 6 minus 4 is 2, 2 minus 1 is 2, that is plus 12. This is plus 60. तो पूरे ब्रैकेट्स हट गए, सिर्फ एक ब्रैकेट है। अब इसको भी हटा देंगे। So what happens here? This is 69 minus जाएगा 32 plus 60. So add all the plus signs and remove 12 from that, minus 12. So this is now what happens here? Plus 32 plus 60. This becomes 92 minus 12. So 8 is the answer. So this becomes क्या होता है ये? This is 80. So now 69 minus 18 is 11. So minus 80 plus 69, 1, 7 minus 1 is 1, 11. So answer is minus 11. That is equals to minus 11 is the answer. So dear students, this is a very important issue which some students are committing mistakes while solving this. So I am teaching you so that if you can correct this in a grassroots level itself, when you grow, you will not commit this mistake. So that's the reason I have taken interest in teaching this for some students who are actually finding it difficult to remove brackets, how to tackle problems within brackets. So we'll go for the next problem. So dear students, बच्चों, we'll go for the third problem. 40 plus, open the square bracket, 21 minus, open the floor bracket, 25 minus 8 minus 2, the vinculum, close the floor bracket, close the square bracket. See here we have a pair of floor brackets and a pair of
we have a open floor bracket, open bracket, that is open and close, open and close. So the brackets are balanced. So what we'll do, अब क्या करेंगे, पहले आपको सॉल्व करना है विनक्यूलम. Whenever you find this on the numbers, on the numericals values, one straight line, that means it's a first priority for that. So this is equals to what? This equals 40 plus, put the bracket here, this is 21 minus, this is 25, में 8 minus 2 is how much? 6, close the bracket, and इसके बाद इन ब्रैकेट को निकालना है. तो इन ब्रैकेट निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो इसको सॉल्व करो, खुद ब खुद ब्रैकेट उड़ जाएगा. तो क्या करेंगे, दिस इज 40 प्लस, इसको डालेंगे, दैट इज 21 माइनस, ये क्या होगा, 25 माइनस 6 इज, हाँ, हाउ मच, 19. सो 19. तो क्या होगा ये, दिस इज इक्वल्स टू 40 प्लस 21 माइनस 19 इज, हाँ, 2. So this equals to what, 42. Answer is 40. Therefore answer is 42. This is here, 42 is the answer. इतना आसान सा प्रॉब्लम है, आसान से कर सकोगे. तो गलतियां करोगे, अगर यहाँ पे देखो ये नहीं यूज किया होता प्रॉब्लम ही गलत हो जाएगा. तो you can't solve this if without first priority should be given to vinculum. Once you solve vinculum, the remaining is quite easy. We'll go for next problem. Dear students, इधर मुझे कुछ बताना है, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी मैं बताऊंगा, क्योंकि थोड़े लोग क्या करते हैं, सब यूट्यूब पहले ही बता देते हैं, तो उसका मतलब कहाँ पे इस्तेमाल करना है वो आपको नहीं पता लगेगा. अब मैं इसका ज़रूरत आया है इसलिए सिखाऊंगा. See what happens is, as and when it is required, at that point of time I'll use the symbols or whatever it is at that appropriate time. So here I have to teach you, here we have minus 3 into minus 6. So now you have to learn note plus into plus equals to plus. Remember this, plus into plus equals to plus, plus into minus equals to minus, minus into minus equals to plus. Now minus into plus equals to minus. These are important parameters which you need to learn. Whenever you get a sign plus, if you multiply a plus with a plus sign, answer is plus. If you multiply a plus into minus, the answer is minus. If you multiply minus into minus, plus. So these two are very very important, this and this. So usually people, बच्चे लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हो, माइनस इंटू माइनस माइनस डाल देते हैं. ऐसा नहीं करनी है आपको माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, मगर प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज माइनस. इसको आपको याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच यू नीड टू रिमेंबर. सो नेक्स्ट स्टेप इधर आएंगे अब. सो आई होप यू हैव कॉपीड दिस. Once again I repeat, plus into plus equals to plus answer. Plus into minus, that is plus into positive into positive is positive. Positive into negative is negative. Negative into negative is positive. Negative into positive is negative. So you need to remember this. I repeat for the last time. Positive into positive, that is plus into plus is plus, plus into minus is minus, minus into minus, that is negative into negative is again plus. So negative into plus, that is minus into plus is minus. If you remember, you have learned something good. So we'll go now. So what you have to do in this, first priority you have to check for what is the priority here.
you don't have vinculum here. On the contrary, you have a product. First give priority for product. Now, what happens here? We'll solve this step by step. This is 15 minus of minus 3. This is 4. Yeah, here you have minus 7 minus 3. First priority for this. So this becomes 4 divided by, so this becomes what? 3 floor bracket plus 5 plus, see, minus into minus becomes plus, 3 6 that becomes plus, that is, I'll show you this, that is plus 18. See, once again I explained you the step. 3 as it is, 5 as it is, plus, so minus into minus becomes plus, so 3 into 6, 18. So I use this bracket only to see that you don't get confused. So now what you have to do, I'll remove this bracket. So what happens, this is equals to what, ये क्या होता है, 15 minus of minus 3, so this becomes into 4 minus 4 is 0 divided by 3 into, मुझे bracket I have removed this, so 5 plus 18 is 23. So I can remove this bracket. Okay, I'll add this one once. Done. So let's solve this. This is 15 minus 3 into 0 divided by, this becomes 3 3s are 9, 69. This is 69. 3 3s are 9, 3 2s are 6, 69. Now look at this. A, if you divide A by A divided by B, so it's like that, A divided by B. So what happens? This can be written as what? This is A into 1 by B. Whenever you have a division sign, you have to convert a division sign into a multiplication sign. So what happens here? A into this division becomes 1 by B. So what I'll do here? So what? 15 minus 0 divided by 69. I'll rub this. Which is nothing but what? This is nothing but the same, so I have to write down because I don't know whether it is visible or not. So what happens here? This is 15. 0 divided by anything is 0. So this is 0 divided by 69. That is nothing but 0 into 1 by 69. That is nothing but 0, because 0 by 69 equals to 0, right? So what happens here? Therefore, that is 15 minus 0 is equals to 15. I love this two step. Yes. So देखो बच्चों, 15 minus 0 is 15. Therefore, this is a question. Therefore, I repeat, therefore, this is what you have to repeat in the examination, minus of minus 3 into what is it? 4 minus 7 minus 3 divided by 3 floor bracket plus minus 3 into minus 6 close the bracket equals to how much? 15 equals to 15. This is your answer. So in the examination, after getting the इतना आने के बाद 15 आने के बाद this is, ये आपका आंसर है. Therefore आपको क्या करनी है, जो क्वेश्चन दिया होता है therefore उस क्वेश्चन को रिपीट करो,
देयरफॉर दिस इक्वल्स टू आंसर इज 15। इतना लिखने पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। सो ये प्रॉब्लम क्या है, और एक प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद विल गो फॉर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सो इतना कुछ अगर आप ब्रैकेट सीख जाओगे अच्छी तरह तो आसान होगा आगे। और जब मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम करने वाला हूँ तो इसका इस्तेमाल करूँगा। अगर वहाँ पर कुछ तकलीफ़ें हो तो मैं इसको सॉल्व भी करूँगा। तो इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है, एक प्रॉब्लम और करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ए प्रॉब्लम हियर। 118 minus open the square bracket 121 divided by 11 into 11. So 11 into 11 is 121. So 121 by 120 is 1. Okay, minus 4 minus 3 open the bracket minus open the floor bracket 3 minus 9 minus 2 vinculum. Close the floor bracket and square bracket. So let's solve this problem. What I'll do is this equals to 118 minus 121 divided by 11 into 11, that is 11 into 11 is 121 minus 4 minus open the bracket 3. So give priority for this. This is 9 minus 2 is 7. So this is 7 and close the bracket. So what happens here? This is equals to 118 minus this is 121. You have to convert this division sign into multiplication. That is what, if you have once again A divided by B. So when you have a division sign, you have to convert. अगर आपको डिवीजन साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। इसको कैसा मल्टीप्लाई करोगे, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कैसा करोगे, दैट इज इक्वल्स टू डिवीजन साइन बिकम्स लाइक दिस इनटू b send it to numerator. So division can be converted into multiplication by this. So this becomes 1 by b. So what happens here? Into 1 by 121 minus into minus 4 minus this is 4, because plus 3 minus 7, that becomes minus 4. So what happens here? 118 minus this is 121, 121 is 1. So minus into minus, I told you minus into minus is plus. So this becomes plus 4. Again minus into minus plus, it becomes plus 4. So what happens here? Plus 1 plus 4 plus 4 is plus 9. So this becomes what? 118 minus 9 equals how much? 109. So this is your answer. 109 is your answer. Please make a note of this. If you want, इसको पॉज करो, पॉज करने के बाद इसको कॉपी कीजिए। तो बच्चों, इसको मिटा दूं, हटा दूं? अच्छी बात है। So now, therefore, 118 minus 121 divided by 11 into 11 minus 4 minus 3 minus 9 minus 2 vinculum equals to 109. 109. This is your answer. So if you want, you can write answer. Dear students, हमने स्टार्टिंग में इंटीजर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड प्राइम नंबर पढ़ा है, जस्ट इन ब्रीफ। सो डिटेल में आगे पढ़ेंगे।
तो मैंने आपको ब्रैकेट्स कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो बताया हूँ. सो इसको मैं आज पोस्ट करने वाला हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द रिस्पॉन्स, कैसे आपसे रिस्पॉन्स आएगा. उसके बाद we'll get into fractions and decimals. So this is an introduction class only to see how I get your reply from your end. If you like my teaching and all that, please let me know because this is the first class. You might feel little bit awkward. आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है क्योंकि ये पहला क्लास है. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप मुझे और खरीद पाओगे और उसके बाद हम आपको आसानी से सिखाएंगे. हम तो सिखा रहे हैं पीयूसी स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं डिप्लोमा मोटर के लिए भी. सो यू कैन रेफर ऑल माई वीडियोस. मेरा चैनल नंबर है क्या, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो मैथ्स फ्रॉम बेसिक्स फॉर यू ये मेरा चैनल है बाय इंजीनियर M.N.Ramdas. इसके बाद व्हाट आई डू, मैं आप लोगों के लिए 8th स्टैंडर्ड 9, 10 फर्स्ट पीयूसी डिप्लोमा एज वेल एज इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ाऊँगा. आपको मैं प्रिपेयर करूँगा 7वीं कक्षा से 7th स्टैंडर्ड से आपको प्रिपेयर करूँ ताकि आप मेरे पढ़ाई में कमज़ोर ना रहें. बट यू शुड बी गुड इन योर मैथमेटिक्स. कोई इस बच्चा ये ना कहे कि मैं कमज़ोर हूँ मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैं हूँ ना आपके लिए. तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को फॉलो करो. दैट इज़ मैथ्स फ्रॉम बेसिक्स फॉर यू. हर टाइप फॉलो करो. अगर आपका बड़ा भाई कोई है या आपके रिश्तेदार कोई हैं तो उनको बोलो भाई साहब आपके लिए सर पढ़ा रहे हैं पीयूसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे इस चैनल के अंदर आपको मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स मिलेगा. अब मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ. इसके बाद जैसा जैसा टाइम मिलेगा मैं करता जाऊँगा. नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन व्हाट, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. सो नेक्स्ट क्लास व्हाट, fractions and decimals. So watch for my next class. So dear students, I end my today's class here with the note. We'll meet again if possible tomorrow itself. I'll try to post fractions and decimals. Here afterwards you'll be getting regular classes for 7th standard and I'll try to do for 8th, 9th as I get time, as and when I'm free. I'll try to post videos. But if you give me good response, अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ के और मेरा चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो मैं आपके लिए हर दिन एक नया वीडियो डालूंगा. हर दिन नया अल्टरनेटिव डेज के लिए एक वीडियो डालूंगा आपके बेनिफिट के लिए. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्पॉन्स. इफ़ यू गिव ए गुड रिस्पॉन्स एंड इफ लाइक माई वीडियोज़, share my videos and subscribe to my channel, definitely I will be motivated to put more videos for you and you will not have any problem in mathematics. I assure you that because I've been teaching for higher mathematics for diploma engineering students. Now my main aim was to see that I prepare you from 7th standard, 8th, 9th, 10th, first PU, second PU and engineering, so that you'll be good in mathematics. That was my main intention. But little late I have done it, but no issues. Somehow let's cooperate and do it. So dear students, with this I end my note, my today's class number 34. Please share this to all your friends. Let your friends, your colleagues, your family members, your brothers, your classmates, they also are well prepared for this. They also get good knowledge of mathematics. And I don't want any kid in our country or outside our country, in the entire world, say maths is difficult, because I want to make you feel maths is easy. It's easy provided you concentrate and you work along with me. So dear students, I end here. बच्चों मैं अब आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ with the note. मैं आपको फिर मिलूँगा. Until then, good night, शुभ रात्रि आपके लिए और भगवान आपका भला करे. God bless you. Take care dear students. Good night. Love you all. Bye. So E2, I teach you mathematics. So from now onwards
we'll have a code words E2 E2. So whenever I say you E2 E2, I teach you mathematics. So what is the word? I T U. What is ITU? I teach you. What? Mathematics. E2 E2, I teach you mathematics. So love you all. Take care. God bless you. Good night.